mounted guns. The handguns includes pistol, revolvers, and derringers. Long guns includes rifles and shotguns. Mounted guns includes cannons and anti-aircraft guns. Okay, these are some pictures of guns. You can see the different model have been displayed. It is available on internet, or you can see in your university classes or in conferences. Only these are the variety of guns you have to see. The .357 Magnum or .38 caliber bullets, 22.5, etc, etc, etc. Okay, the charter arms, rubber grip to ease recoil, etc. The parts of a handgun and understanding of the parts of any gun is essential in forensic ballistics. किसी भी गन का के पार्ट के क्या क्या नाम हैं, ये बहुत ही जरूरी होता है उसको जानना। कभी भी आप किसी को एक्सप्लेन करेंगे, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, इसके लिए आप 10th और 11th स्लाइड को जब देखेंगे तो उसमें पूरा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें लिखा हुआ है, पूरे मार्किंग की हुई है। तो सिंगल एक्शन रिवॉल्वर का है वो, और सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल का है। दोनों के पार्ट्स को बिल्कुल एनोटेशन के द्वारा बताया गया है। तो ग्रिप, हैमर, बैरल,